guys, welcome back to my YouTube channel. I am Tanushree Mahajan, and as you know, we have started a series of 5 days on our tiny habits. So this is the second episode of our tiny habits series. So today's topic is give 1 hour to yourself. It's very necessary to give 1 hour to yourself. We can give excuse that no, I have job, no, I have school, no, I have other responsibilities of family or something, the responsibilities you have in your life. But somewhere in this responsibilities what happens is कि आप खुद को भूल जाते हो. Your hobby, your choices, something you love, and you are just a robot only. Work to home, then home responsibilities, and the rest, as you know कि responsibilities रुकते ही नहीं है. Just give 1 hour to yourself. आपकी एक hobby आपका future भी build कर सकती है. And you can also say it simply makes you happy. I will tell you one thing why hobby is important. Hobby isn't something that we do for time pass, like scrolling our phones on Instagram or something YouTube. It's not like that. It teaches us patience, creativity, and makes us confident also. You never know कि आपकी hobby आपका career build भी कर सकती है. So for example, you love singing. You sing a song like a hobby for 1 hour, but that 1 hour can also build your future. You can be a singer also, you never know. It makes us a very fulfilled person, very happy person. Your heart will be very happy कि आपको जो पसंद है वो आप कर रहे हो. Now I will tell you the power of 1 hour. Why it is powerful? Why I am telling you to give yourself 1 hour, only just one. 1 hour sounds very small, right? But let's do a maths. आप पूरे दिन में से सिर्फ 1 आवर खुद को दे रहे हैं. ऐसे पूरे ईयर में 365 आवर्स अगर आप खुद को देते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल राइटिंग, यू आर राइटिंग फॉर 1 आवर एवरी डे फॉर whole year, like 365 hours in a year. The results will not come very quickly, but you will know that I can be an author. And from the day one, when you started writing for 1 hour, you will be not the same person as you were on the day one. After a year, you will see the changes in yourself. You will notice it that writing is into your hobby. वो आपका career बन जाएगी. And that's why our hobby is so powerful and so necessary. Invest in yourself. I am not saying give your whole day. I am just saying give 1 hour to yourself, only to yourself. Not your boss, not your teacher, not your family, no one. Just you and your 1 hour, your hobby, whatever it is. Just 1 hour to yourself. Just do it. That's very simple. And while doing this, just keep your phone away. 1 hour of your day will change you. You will feel more happy, more peaceful, and you will know your worth. कि मैं किस में अच्छी हूँ, मुझे ये पसंद है. And मैंने ये कहीं पे रीड किया है. Every expert was a beginner who gave themselves the time to learn. Just think on this line. ये बहुत मीनिंगफुल लाइन है. एवरी सक्सेसफुल पर्सन जिससे कुछ नहीं आता था, उन्होंने भी थोड़ा सा टाइम खुद को देके फिर उन्होंने नोटिस किया कि मुझे क्या पसंद है, देन वो एकदम एक्सपर्ट बने. जस्ट यू हैव टू नो योर सेल्फ कि आपको क्या पसंद है. एंड वन मोर थिंग, कभी भी ये मत थिंक करना कि मैं मेरी लाइफ थोड़ी सेटल होने के बाद खुद को टाइम दूंगी, मैं थोड़ा मेरा वर्क है ये मंथ का वो पूरा कंप्लीट कर लूँगी, मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंप्लीट कर लूँगी, देन फ्रॉम द नेक्स्ट वन आई विल गिव 1 hour टू माई सेल्फ. नो, please don't do this. Life will be always busy because of your responsibilities, your work, and as the responsibilities grow, you will miss a very important part of your life, and that is you yourself. You actually forget what you used to love, what you are good at. आपको पता रहता है आप किस में गुड हो.
स्टिल यू थिंक्स नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, सो मुझे ये छोड़ना पड़ेगा। आप इसमें भूल जाते हो, खुद को ही भूल जाते हो, एंड दैट्स नॉट अ राइट थिंग। अगर आपको 1 आवर पॉसिबल नहीं है, यू कैन स्टार्ट विथ 15 मिनट्स, गिव योर सेल्फ 15 मिनट्स, 15 minutes, then 30, then 1 hour. It will be more easier for you also. But just remember one thing, you will see lots of change in yourself, you will be more happier, even if it's 15 minutes or even if it's for 1 hour, you will feel very peaceful. आप खुद के लिए टाइम निकालो, दुनिया के लिए टाइम बहुत बचा है, वो हम डेली देते हैं फॉर अदर्स। जस्ट गिव 1 hour टू योर सेल्फ। एंड रीजंस बिल्कुल भी मत देना कि मैं ये बाद में करूँगी या कल से करूँगी। स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे, गिव 1 hour टू योर सेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ टाइनी हैबिट्स। बाय बाय।